Okay, in this video, we will discuss about limits of piecewise functions and limit of trigonometric functions. First of all, limits of piecewise function. A function is called piecewise if the function is defined in pieces, like for different values of x, the output is different. For example, the absolute value function. An absolute value function is a piecewise function because we know that the absolute value of any expression is equal to itself if that expression is positive, and if it's negative of itself if that expression is negative. Like absolute value of x, we know that this is the definition of absolute value. Absolute value of x is equal to itself, mean x, if this x inside whatever you have inside this absolute value is positive, and this one is negative of itself if this whatever we have inside that absolute value if it's negative. So that's the definition of a absolute value. So whenever a function is given in absolute value form, first you have to open that absolute value function. So here if you see, the question is that this is your function and you have to find the value, the limit of this function when x approaches 0. First of all, we have to open this absolute value. So absolute value of x is equal to x when x is positive. So in the numerator, if we write x, and in denominator it's already x, so x over x will be cancelled, so we will get 1. And when x is less than 0, then we will get minus x, because when x less than 0, the absolute value of x is equal to negative of x. So negative of x divided by x, x will be cancelled out with x, and the remaining thing is 1. So this function is simplified to this form. So this function is 1 when x is positive, and this function is minus 1 when x is negative. And now what's the question? Question is that find the limit of this function when x approaches 0. So we know that the limit of function when x approaches 0 exists if the right hand side limit is equal to left hand side limit. So first let's calculate right hand side limit. So for right hand side, when you are approaching to 0 from its right side, so of course is greater than 0. So here is 0 when you are approaching towards 0 from its right side, so your x of course is greater than 0. So in that case, your f of x, you will consider this one, which is 1. So we'll consider, because you have two functions, you have to choose one of these. So one of these according to your condition on x. Since x is positive, so we will choose the first one. And limit on 1 is a constant remains constant, so limit from right hand side is 1, and limit from the left hand side, for left hand side, the left side of 0 when you are approaching 0 from left side, so it's negative. For negative, you have to replace f of x with minus 1. Minus 1 is again a constant, so minus 1 remains minus 1. So left hand side limit is -1, but right hand side is 1. Since they are not same, so limit does not exist. So the limit of f of x when x approaches 0 does not exist. Let's see the next example. Here the function is again given in the pieces. Two pieces are given. The first, it says that when x is greater than 3, though we have the first function, and when x is less than 3, we have the first function. When x is greater than 3, we have the second function. So here you have to find the limit of f of x when x approaches 3. So first we will calculate the limit from right hand side. For the right hand side, which function should I choose? The first one, this first one, or the second one? Remember, the right side of 3 of course is greater than 3. So which function should I choose? The first one or second one? The second one. Why? Because the second one is x for greater than 3. So I will replace f of x with this function. And then since it's a polynomial, how to find the limit of a polynomial? You just replace x and that value of x instead of x. ठीक, तो यहाँ पर आपने just x की value यहाँ replace करें. Then forget about this positive sign. The role of this positive sign on 3 in piecewise function is just in choosing the function. Once you have chose the function, then just forget about this positive on 3. Just you have, this is a polynomial and this is just consider it limit x approaches 3. So आपने just उसमें put करना है, so you will get 2. And similarly, if you see the left hand side, you will choose this function because x is less than 3 is left hand side. दिस इज़ अगेन अ पॉलिनोमियल. जैसे आपको इसमें 3 पुट करना है तो आंसर 2 है, दोनों साइड से 2 है. सो लिमिट क्या है? एग्जिस्ट करती है.
द नेक्स्ट एग्जांपल देख लो, सेम उसी तरह यहाँ पर अपने लिमिट फाइंड करनी है 0 पर। 0 का राइट साइड कौन सा फंक्शन है, राइट साइड पे ये है, लेफ़्ट साइड पे ये है। इसका मतलब जब आपने राइट साइड लेना है तो ये वाला फंक्शन चूज़ करना है, जब लेफ़्ट साइड से लेना है तो यू हैव टू चूज़ द सेकंड फंक्शन। उसमें आप पॉलिनोमियल है तो जैसे आप 0 पुट करोगे, यहाँ से 0 आएगा, यहाँ से 2 आएगा, जो कि सेम नहीं है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक, ये एग्जांपल नंबर 4 देख लें, जहाँ पे 3 पीसेज में फंक्शन गिवन है और आपने कहाँ कहाँ फाइंड करना है, एक -2 पे फाइंड करना है, एक 0 पर, एक 3 पे। चलें पहले -2 पे देख लेते हैं। -2 का पहले राइट साइड देखना है, लेफ़्ट साइड देखना है। राइट साइड ये लेफ़्ट साइड है, x लेस दैन -2, इसका मतलब लेफ़्ट साइड के लिए ये वाला फंक्शन चूज़ करेंगे, मतलब 2 का लेफ़्ट साइड के लिए ये वाला फंक्शन। और दिस -2 लेस दैन x मीन्स x ग्रेटर दैन -2, तो उसका मतलब है -2 का लेफ़्ट के लिए ये और -2 के राइट के लिए ये वाला फंक्शन। ये दो फंक्शन यूज़ करेंगे, उसमें हम -2 की वैल्यू रिप्लेस करेंगे। यहाँ देखेंगे एक साइड से -1 वैल्यू आ रही होगी और एक साइड से नेगेटिव इन्फिनिटी। एक साइड से अगर इन्फिनिटी आ जाए तो लिमिट क्या होता है, एग्जिस्ट नहीं करता, -2 पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिमिलरली यू विल चेक एट 0 पे राइट और लेफ़्ट पहले चूज़ करो। 0 का राइट किधर है, लेफ़्ट किधर है। इफ़ यू सी ये तो x, अगर आप ये सारे नंबर्स प्लॉट कर लो, एक 0, एक -2 है और एक 0 है और एक 3 है। अब 0 का राइट और लेफ़्ट, ठीक, अब ये तो x लेस दैन -2 है, तो बहुत दूर चला गया ना लेफ़्ट, तो हमने जो 0 के करीब लेना है, तो इसका मतलब है जो 0 का राइट और लेफ़्ट इसके दरमियान आएगा, इनके दरमियान है, क्योंकि x ग्रेटर दैन 3 तो उसका 0 का लेफ़्ट नहीं आएगा। तो ये वाला जो फंक्शन है, दिस फंक्शन 0 इसके अंदर लाई कर रहा है कि नहीं, 0 इधर कहीं है, तो 0 का जब हमने राइट लेना है उसके लिए भी यही फंक्शन है, जब 0 का लेफ़्ट लेना है उसके लिए भी यही फंक्शन है, क्योंकि ये भी 0 का लेफ़्ट तो है लेकिन ये ज़्यादा दूर है, हमने करीब तरीन लेना होता है, और ये भी राइट तो है 0 का लेकिन ये ज़्यादा दूर है। जो करीब तरीन फंक्शन है वो यही है, 0 उनके दरमियान है। तो 0 के राइट साइड के लिए भी सेम फंक्शन, लेफ़्ट साइड के लिए भी सेम फंक्शन, सिंस द फंक्शंस आर सेम सो द लिमिटिंग वैल्यू विल बी सेम, क्योंकि एक ही फंक्शन में आप वही वैल्यू पुट कर रहे हो, -5, सो दे आर सेम, सो लिमिट f of x when x approaches 0 is -5। थर्ड वन क्या था, लिमिट ऑफ f of x approaches 3 पे। 3 का लेफ़्ट क्या है, राइट क्या है, ये राइट है ऑफ कोर्स, ग्रेटर दैन 3, तो ये 3 का राइट है, और x लेस दैन 3 का मतलब है 3 का लेफ़्ट। तो लेफ़्ट के लिए ये फंक्शन है, राइट के लिए ये है, फिर उसमें 3 पुट करना है, और फिर आप देखोगे एक साइड से, दोनों साइड से 4 आ रहा है, आई थिंक इसमें भी 4, इसमें भी 4, तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। ओके, आगे है, आई थिंक दिस आई विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो लेंथी हो जाएगी, ठीक। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कवर द लिमिट ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस।